Hello everyone. Today I am inspired to do a reading for the upcoming 8-8 portal, which is going to be, I think, the most significant portal of this year because number 8 is the number of Saturn, and this is a 2024, and it is ruled by number 8 this year. And 8-8 portal is itself carrying the energy of Saturn, and this energy is going to bring a lot of transformations in our lives. And I'm sure, as any spiritual person seeking changes and transformation in their life is undergoing a major transformative change at the moment. And it started with the 4-4 portal, and it is going to continue till 8-8 portal, and then the energy is going to stabilize in the last quarter of the year. So I'm inspired to do this reading today and bring forth the messages that the angels and spirit wants to give it to all of you and as well as me. So I'm very inspired to do this reading. So we're going to start with the Ganesha cards, and we're going to remember our ancestors, angels, and spirit guides to be present in this reading and to guide us in our path ahead. Let's start the reading. Okay. Let's take out 4 cards from the oracle deck, and we'll do the 8 cards from the tarot. Okay. Yes. So the messages from Ganesha is that it's a number 5. First of all, I'm getting a number 5 and number 7 and number 4. So these are the numbers that people might be saying, because 555 is a change, and me myself is seeing a lot of 555 during this time, and it's saying to remain steadfast in your faith, to keep maintaining your faith. Okay. So this transition that we are going through is a transition from the 7-7 portal to 8-8 portal. So this transition is reflected by number 555, and since I'm getting a number 7, okay, so what is this portal trying to teach us? It's trying to teach us to keep our faith in tough times. So Ganesha is urging us to remain faithful, to remain surrendered. And even though you're going through a lot of spiritual tests, like your capacity to love, your capacity to overcome your past, and also to know your place in the world. Okay, so because we have a card of steadfastness, then we have a card of capacity to love, then we have a card for reflection and belonging. So belonging is telling us that it's this portal is trying to teach us how we belong in this world, like what is our purpose in this world, what are we going to bring it to this world. Okay, they are reflections regarding your own self-worth and also what your past has taught you. Okay, and your capacity to love will be tested and is being tested, and I think mostly your capacity to love is mostly related to your love towards divine. So how much surrendered you are, how much disciplined you are, how much divine trust that you have on the universe is present in your current life, how much you're thinking from the perspective of love, and how much are you thinking from the perspective of lack. So there is this test that is going on, which will test your capacity to bring forth
your knowledge, your reflections about how you are managing your own desires and manifestations, and what you feel about them to fruition. Like, do you think they will happen? Do you think they can actually happen? Do you actually feel that you are meant for the abundance? Do you actually feel your soul is meant for greatness? So, you are being transpired to become the biggest version of yourself and overcome and break your limitations and your foundations. Okay, and this steadfastness, this reflection, this test for your capacity to love comes from a place of innocence. Okay, comes from your devotion, your bhakti, a place where you feel that your love for God is completely innocent, not related to how much you're gaining or how much manifestations are happening. Even when they're not happening, you have that innocent childlike capacity to love God and believe in the goodness of life. Okay, so this is the energy that I'm picking up at the moment from the Ganesha oracle. So I think this is the basis of our reading. So now we'll take like 4 messages from Oracle deck of Shivji. So we want to know what Shivji wants to guide us during that time, how to overcome, how to keep up the determination to keep our faith going, how to believe in love, and how to believe that we are meant for greatness in life, and how to bring about that reflection where we will be able to find our true worth. Okay. All right. So first message is Trishul. Trishul says healing. Okay. All right. So intense healing is going on. Intense healing at the moment. Yes. Okay. Wonderful messages are there, and I'm having this amazing energy in my body. Okay. All right. So 4 messages are there from. Yes. Okay. So this is an intense purging time. Okay. So you are being tested. So your steadfastness, your discipline, your ability to stick to your faith requires you to do a lot of internal healing. Okay, so this time your healing is going on, intense healing is going on, and the healing is guided by the divine. Okay, you're meant to go through this healing. Okay, and your ability, your capacity to love, okay, will only foster if you truly believe in finding faith in the divine order. You should always believe. Okay, it's like a confirmation from the universe that keep the faith, you are taken care of. Okay, so don't worry, believe that you're abundant, believe that you can close toxic cycles, believe that you can overcome karmic knots, you can overcome your karmic baggage, you can overcome your limitations. Okay, and reflection. So the part where you can integrate your reflections, and you can have an ability to process your past, your present, and your future thought processes, as well as to maintain that positive outlook towards life, is through yoga. Okay, so either it could be a physical form of yoga, okay, like exercising, like surya namaskar, or it could also come from the yog nidra, like if you're doing any kind of self reflective meditation, you're sitting in stillness. Okay, that will bring about a great transformation in your life at this moment. So I think anybody who's listening to this reading, including myself, is required to heal themselves, because this is what is happening. Keep at it, keep at it, don't deter yourself, and believe that there is a higher power which is taking care of you at all times. This is a confirmation by Lord Shiva himself. हमारे यहाँ इस वक्त we are going through Sawan month, which is the month of Lord Shiva.
and he himself is saying that you are taken care of. So believe in the limitless power of your soul. And to integrate these energies and the spiritual downloads, yoga nidra, meditation will help you a lot, and especially the physical activity. I think it's more towards the physical activity which will help you integrate this entire process into your body, okay? And the ability to know your true self and to find yourself doing what you need to do will be enhanced by the mantra chanting. Okay, so sound therapy has come up for the healing process. So the more mantras you chant, I see Om Namo Shivaya, I see like a Tibetan ball sound energies, okay, which can help you. Some people might be artistic who are coming into this reading, and the music will actually help them find their place and heal their heart, okay. So there are some people who can put chimes in their house, okay. Chimes will, the sound produced by the chimes and the the wind is going to help them heal, and they have to listen to it on a daily basis. So these are the messages from Lord Shiva during this time, that he's teaching us immense faith, like complete surrender, okay. Complete surrender करने के लिए ही we have to do these things, right? If we are struggling with it, we have been told that we should be doing it. See, I was drawn to a card in the oracle deck. The first one, like the bottom of the deck, is the wisdom card. It says that we are going through knowledge and spiritual downloads at the moment, okay. Along with that, there is a card that is behind it, and it says that clearing and shielding is taking place. So there are a lot of things happening in the background that we are unable to see it through our eyes, okay. But only we can see it when we see it through our third eye, okay. So they are saying that a lot of changes are taking place in the background that you might not be able to physically see, but if you try to sit in calmness and meditate, you will be able to overcome these physical challenges through your emotional and meditational skills, okay. Now we'll see what planets are influencing. I'm sorry, it's just all the cards are not there, so I have to see if where are the cards. Because I need to see which, because we are going through actually Mercury retrograde at the moment, so I need to know if Mercury is playing a role in this, and I'm actually looking for a Mercury card to be honest. Is there, then just arranging my cards. I'm really sorry for that, but there is a hidden message in all of this, and there is no mistake in the universe, okay. So we'll ask the angels about what planets are playing a role. So of course Jupiter is the first planet, which is a planet of higher learning, and this is the wisdom and the spiritual downloads that we are getting at the moment. Neptune, we take 4 cards. Okay, so I have gotten 5 cards, okay. So we take the divine for what it is, okay. We don't use our own thing. What other angels are trying to tell us, we're going to use those cards.
So okay, yes, of course, the background is of Saturn, so there is a Saturn background, but of course there's a lot of higher learning taking place, and that is healing us in magnificent ways. So we can do puja for Brahspat, we can do Thursday fast, we can listen to Brahspat chants, which will actually Brahspati Dev ke या विष्णु भगवान के, we can also do Om Namo Bhagavate Vasudeva chants, which will help us integrate this knowledge and help us use our own wisdom to overcome our own blockages. Okay, so yes, हमारे ऊपर से माया हटाई जा रही है. There is a Neptune here, then there is full moon healing, and then there is Mercury here, and there is Venus here. Okay, सो यस, हमें कहा जा रहा है कि हमें बहुत हायर लर्निंग करनी है. ठीक है, हमें माया के ऊपर से उठना है, हमें मून की हेल्प से अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है. ओके, उस मून की हीलिंग से रिफ्लेक्शन करके कि हम योग निद्रा करके हम अपनी मून की एनर्जीज़ को, अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं बाय डूइंग योगा. ओके, नेपच्यून ये बताता है कि it's trying to show us that there are times when we get entangled in the Maya world. Okay, and that is the hypnosis. उस टाइम पे आपको फेथ रखना है. शिव जी कह रहे हैं कि you have been taken care of. Can believe in your capacity to love, believe in your capacity of limitless abundance. Okay, एक ये भी मैसेज आ रहा है. Along with that, साउंड थेरेपी के साथ मर्करी आ रहा है. मर्करी इज़ a planet of communication, right? So sometimes your art, you can heal yourself through singing. Okay, and either you can heal yourself through going to music class, or by having heart to heart conversations with people that you have issues with. तो कहा जा रहा है Mercury will bring a lot of healing and belongingness in this world. So communication is coming as a very important tool in finding your place in the world. Okay, so if any of you who are healers here and who wants to do something, who want to find a place in their life, okay, and they're thinking of doing social media, or they're thinking of coming across and doing a podcast, or thinking of talking to people, or even if it's your friend, you want to clear out uh, problems with somebody and you want to communicate with them, so this is a very good time to be able to form that bond with the other people. Okay, and yes, Venus comes in to tell you that you have immense capacity to love. Okay, so शुक्र देव की भी इस वक्त बहुत बड़ी ऊर्जा है. So all of these planets are guiding our healing during this portal, and ये सारे planet activate हो रहे हैं इस वक्त. Okay, so we have Jupiter, we have Mercury, we have Venus. फुल मून्स जो अभी हमारे आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन हीलिंग आर इमोशनल वूंड्स, कार्मिक नॉट्स, एंड लेटिंग गो ऑफ आवर पास्ट. ओके, एंड फाइंडिंग आवर इनर बैलेंस. ओके, ऑलराइट, सो नाउ we are going to take tarot now. Let's take tarot. We'll take 8 cards because it's an 8-8 portal. All the lessons that we need to learn are coming up actually. Hermit की एनर्जी भी मुझे अभी दिखी. Alright.
सो आई एम सीइंग कि हमें क्या क्या लेट गो करना है, ठीक है। पहला हमारा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। तो हमें ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें लाइफ में, ठीक है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, और हमें हर सिचुएशन में एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। हमें हर अपॉर्चुनिटी को वी शुड थिंक ऑफ इट एज अ थ्राइविंग अपॉर्चुनिटी इन आर लाइफ, ठीक है। लाइफ हमेशा मौका देता है, तो वी शुड ऑलवेज टेक द सेकेंड चांस एंड वी शुड ऑलवेज मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो हमें एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है अपनी लाइफ में जहाँ पे हमें ये लर्न करना है कि लाइफ विल बी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट तुम्हारा जो कप है वो हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फिल होएगा, और तुम्हें उसी पे ध्यान देना है। तुम्हें आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि ये चला गया, वो नहीं हो पाया। यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। ये एक बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट की एनर्जी है। आप देखो कि ये बंदा इस कप को इतने ध्यान से देख रहा है, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, बट ही इज़ नॉट वेवरिंग फ्रॉम हिज डिटर्मिनेशन एंड ही इज़ सीइंग हिज प्रेजेंट मोमेंट एज अ ट्रेजर, ओके। इसमें फिश रखी है एंड कप इज़ फुल, ओके। सो कप इज़ ऑलवेज फुल। सो एक ये थॉट प्रोसेस आपको अपनी हीलिंग में हेल्प करेगा, जब आप सोचोगे कि जो आपके पास है वो इनफ है, ओके। इट्स इनफ, ओके, आई एम इनफ, ठीक है। दूसरा आपको ये बताया जा रहा है कि येस, इट्स एन एंड ऑफ अ साइकिल। ये डेथ का कार्ड आया है, डेथ इन अपराइट आया है डेथ। तो ऑफ कोर्स इट्स एन एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और ये साइकिल तभी एंड हो पाएगा अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को एक कंटेनमेंट के साथ देखते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ देखते हैं, तभी ये एंडिंग आ पाएगी, ठीक है। ये हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है नेक्स्ट, बट इट हैज़ कम अपराइट। दैट मीन्स कि जो आपकी दूसरी सोच है, अलग सोच से आप सोचना शुरू कर दिया है, आपको उसी पे ही कायम रहना है, ठीक है। जो आपको इनर विजडम मिल रही है इस टाइम, आपके स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत सारी बातें कर रही है, आपको उसी पे ही ध्यान देना है, ओके। दैट थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी क्या होती है, यूजुअली इट टेल्स कि ये ऐसी एनर्जी होती है कि आप जो सोच रहे हो आपको उसके ऑपोजिट सोचना है, ठीक है। बट ये ऐसे आया, इसका मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो, और यही आपकी एंडिंग लेके आएगा। तो जो आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस है वो आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। दिस इज़ योर इनर सेल्फ, योर हायर सेल्फ, सी एनलाइटन सेल्फ। ये आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है कि आपको यही करना है, ठीक है। सो नाउ यू आर मेकिंग द न्यू थॉट प्रोसेस योर रियलिटी, एंड दैट इज शिफ्टिंग योर साइकिल, ओके। और ये कहा जा रहा है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं, जैसे पास्ट की चीज़ें आपने कुछ ज़्यादा ही अपने हाथों से चिपका के रखी हुई हैं, ठीक है टू हैव सिक्योरिटी व्हेन यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट विल गोना हैपन, तो उससे आपको सिक्योरिटी ज़रूर फील होएगी, बट इससे आपको इन चीज़ों का खोने का डर भी बढ़ेगा, ओके। यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू दीज थिंग्स सो टाइटली। तो आपको ये हैंडमैन एनर्जी यूज़ करनी है, और इस एनर्जी को, वो स्टक एनर्जी को, वो ब्लॉक्ड एनर्जी को कि यार आई वॉन्ट सिक्योरिटी, आई वॉन्ट दिस थिंग टू गो एज आई प्लान, और आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन, इसको आपको नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई थॉट प्रोसेस लेके इसको आपको लेट गो करना है, ठीक है। इट्स अ 6 ऑफ सोल्स, इट्स अ लेटिंग गो एनर्जी। यू आर लेटिंग गोइंग दैट फीलिंग कि भाई नहीं, अब मैं नया सोचूंगी, क्योंकि एक मेरा नया साइकिल शुरू हो चुका है भगवान की कृपा से, ओके। एंड ये कहा जा रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स का कि द अबंडेंस इज देयर, ओके। दिस इज़ द अबंडेंस। जहाँ पे आप लेट गो करोगे वहीं से आपकी अबंडेंस शुरू होएगी, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट कार्ड। एंड अबंडेंस की तरफ जाते जाते आप ज़्यादा पैशन तो दिखाइए, ठीक है, पैशन भी दिखाइए, एंड बिलीव कि हर चीज़ आई कैन अचीव। सो देयर इज़ अ नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड ये बताता है कि आई डू बिलीव इन द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मैं विश्वास करता हूँ कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ, आई हैव द वॉन्ड एनर्जी, ओके, आई कैन डू इट।
तो ये बिलीविंग इन योर सेल्फ ओके इज विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ बिलोंगिंग वाली फीलिंग कि यू नो योर प्लेस इन द वर्ल्ड. सो ऑल दीज कार्ड्स आर टेलिंग अस कि हमें कैसे ये साइकिल को क्लोज करना है और कैसे नई साइकिल की तरफ बढ़ना है. दिस इज़ अ ट्रांजिशन. ओके, तो पुरानी एनर्जीज भी अभी आप ओवरलैप कर रही हैं आपकी प्रेजेंट थॉट प्रोसेस से, राइट, विच इज़ अ न्यू टाइमलाइन. बट न्यू टाइमलाइन पे अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो यू आर नॉट कम्प्लीटली इन दैट टाइमलाइन वेयर ओनली थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव. यू हैव द पास्ट timelines which are running parallel to your present timeline, and you are sometimes going in those timelines and then you're coming back. So you have to find your balance in the new timeline. Okay, एंड देखिए जैसे ये कार्ड है, ये सिकनेस एंड बीमारी एंड यू नो सॉरो मिजरी का कार्ड है. एंड ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है इसमें, 5 ऑफ कॉइन्स. तो इसमें यही एनर्जी है कि ये 5 की ट्रांजिशन की एनर्जी है कि आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है. यू आर नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, और ये एनर्जीज आपको लेट गो करनी है. ठीक है, आई डोंट नो, आई बीन गाइडेड टू टेक आउट 2 more cards. आई थिंक दैट विल मेक 10 ऑफ अ साइकिल. ओके, 2 कार्ड और निकाल लूँगी तो 10 कार्ड हो जाएंगे, विच इज़ लाइक अ एंडिंग ऑफ अ साइकिल. से आई वॉज गाइडेड. सो ये एम्प्रेस का कार्ड आया है दैट आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू विल बी oh god, see, it fell on its own and it says a magician. Okay, you will become the magician. Okay, or I always take the strength card because it's Durga Mata's card in my opinion. ठीक है, और इसमें भी देखो, oh my god, there's a masculine and a feminine energy. See, ओके, सो हमारे 11 कार्ड हो गए हैं टोटल, एंड 11 इज़ वेरी ऑस्पिशियस नंबर. सो हमें बोला जा रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, वी विल नो हाउ टू बैलेंस आर इमोशन एंड वी विल बिकम एन एम्प्रेस, we'll have an empress energy, that we will know how to balance our thoughts, our emotions, and we'll become a full divine feminine. Okay, एंड वो सब अचीव करके हम एक magician, हमारी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी दैट वी बी एबल टू मैनिफेस्ट and achieve whatever we want. Okay, and there's a infinity sign there which says a 8 number. Okay, and there's another sign here of female deity. I always think that, you know, strength card is Ma Durga with her lion. Okay, so ये divine masculine है, ये divine feminine है. They both have infinity on top of them. So it is showing a union of both these energies. Okay, और ये union आएगा, ये आपको लेके आना है, अपने नए thought process को कायम रखना है. ओके, फियर को बिल्कुल रूल नहीं होने देना है. यू हैव टू ओवरकम योर फियर्स एंड कार्मिक नॉट्स. ओके, यस, ऑलराइट. सो अब हम एक, हमारे पास डेक है, हम उस डेक से वी विल फाइंड आउट कि ये एनर्जीज आज हमको कहाँ पे लेके जा रही हैं, ऑन विच स्पिरिचुअल पाथ, हमें क्या सीख करना चाहिए. See, contentment. So I talked about Page of Cups. I talked about how your cup, you should see your cup as full. और उसी के ऊपर की जो एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड आया है, वो संतोषा का आया है, कंटेनमेंट का आया है. सो येस, दिस इज़ वॉट the universe is trying to show us. And see, you know, this is very strong. जो contentment की energy होती है वो very divine feminine energy होती है, you know, believing that, you know, you have enough, you know. and ये देखिए इसमें 6 औरतें हैं, which is a number of Venus, शुक्र, and they are standing there and they're looking up on the sky. Okay, and they are content with their lives. Okay, they're showing that they're calm, they're looking up to the mountain, they are believing in the higher powers, they are being blessed by the universe, and they have a lot of content in what they have. Okay, they are completely content. They're not looking for anything. You can't see their expressions looking out for anything. They are content in what they see and what the divine is downloading to them. Okay, so yes, contentment is very important for you to close this cycle. Very, very important. Okay, it's coming as a strong message.
यस, एंड विथ कंटेनमेंट, जैसे मैंने बोला कि आपको जो ये वाली एनर्जी है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली, जिसमें यू होल्डिंग ऑन टू 4 थिंग्स वेरी स्ट्रांगली, ओके, और आपको लग रहा है यू नॉट सिक्योर, यू नॉट सिक्योर, यू आर इनसिक्योर, तो उसको हील करने के लिए आपका मूलाधारा चक्र है, विच इज़ अ रूट चक्रा, विच इज़ इम्बैलेंस्ड एट द मोमेंट, ठीक है। मूलधारा पे आप काम करेंगे ना, तो इट विल ब्रिंग एंड टू दिस साइकिल. I think what is holding you back from ending this cycle is your own insecurities, okay. The more you'll work on your Mooladhara chakra, okay, the more you will work on your root chakra, the more balance you're going to bring into your outer world, okay. Major changes in your outer world. Oh wow. Oh God, I told you there's an energy of divine feminine. It's Lalita Tripura Sundari. She is the mother goddess. She is the cosmos ka mother, okay? And she is guiding your journey right now, okay? She is the Durga Mata, okay? She is the eternal divine feminine in the cosmos. And she is guiding your ascension journey at the moment, okay. And consider praying to Lalita Tripura Sundari. Consider doing her Stotram Sahasranam is very very powerful, and you can get initiated into Shri Vidya and do the Shri Yantra Sadhana if you wish, and you can do meditations to Shri Yantra, and that will help you break the karmic knots and bondages of your present cycle. This will help you immensely, okay. And next is, okay, Swadhisthana chakra. So let me go to Swadhisthana, okay. So yes, as I talked about it कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, right, कि आपको आपके अंदर ये नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है, और इस पे आपको कायम रखना है, okay. And that is the energy of Swadhisthana. Swadhisthana is teaching you to remain passionate, to remain creative in life, okay. And जितना आप ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करेंगे ना, that will broaden up your heal your Swadhisthana chakra. So 2 healing systems are needed, okay. One is Swadhisthana chakra and another is root chakra, which is not letting you close the cycle, okay, which is a kind of a, ओ माई गॉड, यस, विजडम. जुपिटर जहाँ आते हैं वहाँ पे सरस्वती भी आती हैं, बिकॉज शी इज़ द मदर ऑफ विजडम. तो आपको विजडम दी जा रही है बहुत ज़्यादा. ये पोर्टल आपके अंदर चेंजेस लेके आएगा. इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ विजडम एंड इट इज़ चेंजिंग योर एंटायर DNA. आई हैव अ फीलिंग यहाँ पे DNA अपग्रेड्स हो रहे हैं और आपको सत्य के मार्ग से जोड़ा जा रहा है. एंड देयर आर सम पीपल हु कैन बेनिफिट, जिनको बहुत ज़्यादा क्रोज या बर्ड से सिंक्रोनिसिटी हो रही होएगी. देयर विल बी सम पीपल हु आर यू नो, उनको बहुत ज़्यादा तोता दिख रहा होएगा, पैरट दिख रहा होएगा या क्रोज दिख रहे होंगे. सो दे शुड स्टार्ट फीडिंग द बर्ड्स, यू नो, एंड शुड स्टार्ट स्टेइंग मोर इन नेचर एंड मेडिटेटिंग. तो उस टाइम आपको बहुत ही विद्या, बहुत ही डाउनलोड्स आएंगे, ठीक है. दैट विल